Okay, so we are good to start now. This is my screen in front of you. Sure. Screen is visible? Yes. Yeah. So see, if you have not used GPT today, many times, so you have GPT 4.0 with you. Okay. So in GPT 4.0, we have option to generate Excel file. You can generate an Excel file in GPT. If I have, suppose I provide a line to a GPT like provide me the sample data file in the Excel form which contains college, sorry, college data of 50 to 60 students. Let me check, do we get something or not? Okay, so see, it's analyzing. So I have not used, I think, GPT today. That's why my GPT 4.0 is working. In your case, check it is working or not. So it's analyzing means it will be going to generate an Excel file and it will be going to provide me an Excel file. Check at your side. Does it work? Okay. It will take some time to analyze depending on your network. So till that time, also I need to check for. So it is analyzing till now. Okay, no worries. If it is generating, okay, it seems there was an issue that data links not matching. I will correct data and try again. Okay, let it try. If it is not working, then we have another option. So we need to work together on the same CSV or Excel file. That's why I was searching if I'm getting any file or not. Okay, Dhanashri done. Dhanashri, do you got Excel file generated? I got one. Okay. So does it contain some data? Check, open it, download it. Yeah, Vedanshu. Vedanshu, can you share it on where you can share it? You can share it on WhatsApp or you can just share your screen and let all see how the data looks, generated data. Okay, just share your screen, okay? And Dhanashri, you can share your result on group as well, okay? And Vedanshu, you can also share your file. Okay, anyone just share please. Okay, in my case it's taking time. Okay, Dhanashri shared. Let me check. Kushi also got. Great.
So I am downloading a sample data set from a GitHub. Okay, Vedanshu, you share the screen. Just I'm also downloading a sample data, so I will providing you to all. Let me see. Vedanshu, you shared your screen. Just share it again. Yeah, where is your data? Show me. Okay, great. So you started downloading. Open it. Good. So see, in this way, you can also generate a sample data from a GPT, and you will be getting this type of sample data. Okay. So for now, for we all will be working on a similar data. So I have provided you one link of GitHub. Please go on it and download that sample data. It is related to college. Okay, just I search for it. Please go and download it. Okay, everyone. After downloading, just confirm me that you have downloaded it. And if you're using the Jupyter, so see that you are pasting means you are keeping that particular CSV in that folder only, or you can provide a path. Okay, no worries. So I think we are at the same point, and I can start the explanation of Panda from the beginning. Is it fine for all? Can I begin now session? I hope all have done with the installation and this whole thing. You ready? Okay. So I hope my screen is visible. Now I'm at another screen. So let me begin with the session. Remove this thing and see. So today we are beginning with the pandas. Okay. So starting from a very beginner level that you don't know anything. So the first thing you need to do is that pip install pandas. So you need to install the pandas. After installing the pandas, same thing that we have learned yesterday, that we were doing import numpy as np. In the similar fashion, we will be doing import pandas as pd. Okay, pd will be its alias. See, my cell got executed. So come up to this point, so we can move further. Everyone, just import pandas. Done. Import pandas done. Okay, वेरी सिंपल थिंग, इधर तक तो उसको कोई कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा. ठीक है, अब आगे अपन शुरू करेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पांडा में, वो अभी स्टार्ट करेंगे. पांडा इज अ वेरी 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 सिंपल. ओके, सिर्फ आपको पता रहते हैं CSV, एक्सेल, अदर फाइल्स पांडा में कैसे हम रीड कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेटा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, so I will be starting with a very basic level, and we will be seeing the data structures in pandas. अब डेटा स्ट्रक्चर सुन के ग्राफ व्राफ ये मत लाना दिमाग में. वेरी सिंपल थिंग इन पांडास डेटा स्ट्रक्चर. तो डेटा स्ट्रक्चर पहला है इसमें सीरीज. क्या है सीरीज? तो सीरीज, व्हाट इज अ सीरीज? सीरीज होता है वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे. क्या होता है सीरीज? वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे. अब ये डेफिनेशन से समझा नहीं है तो मैं बताता हूँ डेफिनेशन. सपोज S is equal to PD dot series. You can see in from pandas I am taking a series, और वो series में I am passing I am passing see what I am passing. I am passing a one dimensional what? One dimensional labeled array. तो see 1 3 5. और कल हमने कुछ ऐसा सीखा था क्या, कुछ np dot nan. Anyone let me know what is nan? अब देखो मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, एंड लेट मी रन दिस टेस्ट. व्हेन आई विल बी गोइंग टू प्रिंट एस, आई विल बी गेटिंग दिस आउटपुट. nan क्या होता है? एनीवन प्लीज लेट मी नो. nan क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय nan? एनीवन? या एनीवन, व्हाट डू यू मीन बाय nan? अभी ऐसा होगा कि अपन ने numpy सीखा है, तो साइड बाय साइड आई विल बी टेकिंग द concepts of numpy and pandas as well, because it will be making you familiar. Okay, very good. Not a number. nan stands for a not a number.
So you can see when I created an array in front of you, that is a series, one dimensional labeled array. Okay. So you can see whenever I printed it, I got the proper indexing, and at third index, this is my third index, I have written NaN, that is a not a number. So many of you are worried, what is this NaN? So कल जैसा ही बताया था, अपन क्या ओपन करेंगे, वेयर इज माय जीपीटी। तो मैं जा रहा हूँ जीपीटी पे, और जीपीटी पे जाके पूछूंगा व्हाट इज NaN। अब देखो आपके सामने क्या आएगा, not a number is right, but see, okay, so it is providing me two different responses. Whichever response we find is good, we will be selecting that. Okay, chalo, we'll prefer this. So you can see NaN stands for not a number. It is a special floating point value used to represent missing or undefined data in dataset. So if you are writing in a notebook, please mention one thing in a notebook, that whenever you are dealing with large data or raw data, there will be NaN values, there will be the missing values. So you need to perform a EDA. क्या करना पड़ता है अपने को, काहे मीट। So whenever there are NaN or this type of missing values, so we perform their EDA. EDA, ये EDA क्या होता है ये आगे को पता चलेगा। EDA stands for exploratory data analysis, बिकॉज जब अपने पास इम्बैलेंस डेटा आता है, सो वी कैनॉट प्रोसीड इट फर्दर। अपन वैसा डेटा जाके उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। वी वांट अ प्रॉपर डेटा जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज ये सब चीज नहीं होना चाहिए। सो वी हैंडल दोस थिंग्स थ्रू द EDA। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? सी, फ्रॉम वन concept we are learning other concepts as well. Clear? Just give thumbs up. वेरी गुड। ठीक है, तो ये देखो अभी NaN के बारे में इतना सब अपने को डिटेल्स मिला है। So what you need to remember is that it is not a number, and you can also remember this point as well. Arithmetic operation with NaN will often result in NaN. Means when whatever operation you perform with NaN, you will be going to get NaN itself only. Okay. I hope this point is clear to everyone. Let's move further. So this is a simple series which I have printed in front of you using the pandas. अभी हमें जो देखना है वो है important data frame. What do you mean by data frame? सो पूरा ज़्यादा करके हम डेटा फ्रेम जब सुनते हो ना, तो रिमेंबर दैट इज टू डायमेंशनल, अरे अरे, टू डायमेंशनल, साइज्ड, म्यूटेबल, very important point I'm mentioning here, and potential, I should write potential, okay, potentially heterogeneous tabular data. अब देखो डेफिनेशन में ही सब कुछ लिख दिया है ज़्यादा करके मैंने। मीन्स इस कैन डेटा फ्रेम कैन बी टू डायमेंशनल, साइज म्यूटेबल है, हेट्रोजेनियस है, मीन्स मिक्सचर ऑफ डेटा है। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। इन इंटरव्यू you may ask that create a data frame. Very simple, creating a data frame is a very simple thing. So see what I am writing. अभी मैं जो लिख रहा हूँ ना, इसको किसी को समझ में नहीं आएगा। लेट मी राइट इट फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, अभी मैं तुम्हारे सामने एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। So see, I'm creating a data frame in front of you, और मुझे बताना है इज इट हार्ड टू क्रिएट एनी डेटा फ्रेम। ओके, अब मैं इसको जैसे प्रिंट करूंगा ना, तो प्रिंट कैसे करते इसको देखना। df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, इसको बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर मैं पास करूंगा डेटा। सो व्हेन आई विल बी गोइंग टू प्रिंट माय डेटा, यू विल बी गोइंग टू सी द डेटा। डेटा कैसा दिख रहा है, डेटा कैसा दिख रहा है। सो कैन एनीवन लेट मी नो, इज देयर एनी अदर वे ऑफ प्रिंटिंग अ डेटा? अगर किसको पता होगा तो, नहीं पता है तो देखो, different ways of printing data. देखो, so you can see there are several ways of printing data. You can do print df, and this. You can see now a very important thing, a very important thing. कोई तो भी मुझे कुछ बता सकेगा कि मैंने यहाँ पे डेटा प्रिंट किया है, और इफ आई प्रिंट df, what will be the result?
Anyone from you? If I print df, what will be the result? If I print df, what will be the result? See, I have created a data frame here. I just printed this data, okay? मैंने data print किया है, मैंने df print नहीं किया है. When I will be going to print df, what will be the result? Any idea? Any idea? It will come in rows and columns. Tabular. हाँ, वही definition में बताया था. Tabular और rows और column. Very good. Vedanshu as well as Kushi. So see, clear? You can see whatever you have created, you got in a proper tabular form in the rows and columns along with the indexing. So I hope up to this point, simple thing clear है. Yes or no? Simple thing कि series क्या होता है, data frame क्या होता है. Anyone just unmute and let me know that I have cleared simple things in the pandas. बोलो. Anyone? Yes. Yeah, good. So see, I think I need to give you more introduction about the pandas. How many of you have learned pandas before this? सिर्फ ऐसा पता है, मतलब सुना है, मतलब ऐसा भी बोला तो भी चलेगा कि पांडास के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, थोड़ा बहुत. ओके वैष्णवी और धनश्री. तो देखो, सो हाँ खुशी, वेरी गुड. सो आई विल बी गोइंग टू टेकिंग यू फ्रॉम द बेसिक लेवल. तो पता भी होगा, तो यू नीड टू जस्ट रिवाइज योर कॉन्सेप्ट. ओके, सी नाउ हियर. So about talking about the pandas, so it's working with the data set. Means whenever you heard pandas, main concept, main goal of panda is to work with the data set. And जो भी function होते हैं ना pandas में, it is used for what? Analyzing, then cleaning. ये सब किस में आता है, ये भी बताया मैंने आपको. Exploring and manipulating data. Okay, ये सब होता है तुम्हारा ईडीए में. ऐसा भी तुम बोल सकते हो क्योंकि एनालाइजिंग, क्लीनिंग, एक्सप्लोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग इज डन इन द पांडास. ओके. और जो पांडास का जो नेम पड़ा है ना, जो पांडास नेम इज इन फ्रंट ऑफ यू, इट हैज सम रेफरेंस. इट हैज सम रेफरेंस. ओके, ये पांडा जैसा पांडा को देख के नाम नहीं पड़ा है. सो इट हैज सम रेफरेंस एंड इट्स बेसिकली कॉल्ड एज पाइथन डेटा एनालिसिस. ओके. So pandas ka, you can say it's a short form or a full form, whatever you want to take. So it stands for, or it refers to a Python data analysis, or you can also call it as panel data. Okay, it is also named as a panel data. Very good question arises. There are similar types of libraries like a pandas, but pandas क्यों use किया जाता है? Because whenever you are dealing with a big data, whenever you are dealing with the big data, so the analysis of what? Big data. Analysis of big data, it makes it easier. It makes it easier and it allows you to analyze the big data. And you can also perform different statistical theories in that. Okay. And if I want to mention more points related to the pandas, it can be also mentioned that hmm, pandas can clean messy data. Messy means a very imbalanced data set or anything you can say. And it make it what? And it make it and make them readable and relevant. Okay. So this is the goal of using the pandas library. So whenever you are exploring the field of data science, so always remember that which data is important to us, that relevant data is very important in data science when you are dealing with the data. Okay, so that's why pandas can be used in these cases. So this basic introduction is clear to all? Yes or no? Yes or no? Yes. Good. So let's move ahead and see. So everyone just with me type one line, that is
print pd dot hyphen hyphen sorry underscore underscore version. Check your pandas version, which version you are using. So this is the way we can check the version. Everyone, my one is 2.2.2 triple two. What about you? Same. Same way. Others? 2.1.3. Okay. So remember, this is the thing of checking the version. Okay, whenever someone asks you, let me know your version, so you can follow this step and you can let them know the version. What is your Python, NumPy, or whatever you are using, you can let them know the version of particular library. Okay, so let's move ahead and see some different operations. So again, starting with series, I'm taking you with different things. Everyone just create me a simple series. Creating a very simple series. A is my variable, and in data, I am writing pd dot series, and I'm passing a in it, and let me print data. So see, I got this thing printed, that is my series. So now I am teaching you the concept of a labels. Labels. What is labels? So what is labels? See, if okay, let me orally explain you instead of writing because it takes lot time. So what do you mean by labels? So if nothing else is specified, the values are labeled with their index number. You can see here. If nothing is specified, if nothing is specified, then values are labeled with their index number. First value has index 0, second value has index 1, and etc. I hope you can see this thing in front of you. So whenever you are mentioning nothing, you can see what the labels are there. Suppose I want to check that my data at 0th position, which value is there. So I can see that there is a 1 present. So at 1 position there is 7. Okay, so by default it starts from a 0, but I want to create a label. I want to create label. So is it possible to create labels? So see, we have an option in the pandas, or you can say in the series. So what can I do? What can I do? Same thing. In this, it is in front of you. I'm copying the same thing. I'm pasting here, and I am just providing an index to it. I'm just providing an index to it. With the index argument, you can name your labels. Suppose I want to name my labels as what should I name? I should name it as L M N. Okay, just I name whatever I want, and if I print it, you can see my index got changed to LMN. So if I want to now check, if I want to check at data at L position, there is a 1. So if I want to check at N position, there will be 2. Okay. So in this way, you can have labels provided. Is it clear to everyone? Yes or no? Labels. Label समझा? Why? अच्छा repeat. So see Vedanshu, in pandas we have option to we can give our own indexing. So by default it is giving 0 1 2, but you want your own indexing. मुझे मेरी indexing चाहिए, so I can provide my own indexing like in this fashion. So I am providing my own indexing. So अभी मैंने एग्जांपल दिया है बाय डिफॉल्ट, जब बड़ा डेटा होगा तब क्या करना पड़ेगा. So वो भी हम देखेंगे कैसे डील करना है बड़े डेटा के साथ. ठीक है. So whenever you are checking that end position में क्या present है, which number is at end position, so I will be getting printing 2. Is it clear, Vedanshu? Yes or no? Yup. तो चलो आगे. अभी आगे एक है concept, वो है key value objects as series. अभी हम series ही देख रहे हैं, अभी तक हम डेटा फ्रेम में गए नहीं है. ठीक है. तो अभी मैं की वैल्यू बताऊंगा आपको कि की वैल्यू क्या होता है. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अ की वैल्यू. तो सपोज
I am going to gym. For example, I'm going to gym. Okay. So I'm creating in front of a key value. So what I've decided on Monday, on Monday, I will be going for gym for 2 hours. Okay. On Tuesday, I will be going to gym for 1 hour because I have some work. In the same fashion, on Wednesday, so I'm preparing a schedule. So I will be going to go gym for 2 hours. Okay. So when I will be going to convert this gym, for example, let me define a data. In data, I will be creating a series, PD dot series, and I will be passing the gym in it. Okay. Now you can see how this key value will be going to represented in the front in the form of a data. So see, Monday, Tuesday, Wednesday. So the keys of the dictionary become the labels. A very important point. The keys of the dictionary become labels. So in dictionary there are keys. So those keys become labels. Is it clear, everyone? Yes or no? Yes. 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 Very good. Yes. So now see, moving ahead, now we will be going to explore a data frame. So series is not that much important because series is just a one dimensional. You can see we are creating a series in a very simple manner. Just if you want to explore series more, you can take a help of a GPT, or you can just explore the simple operations, like what are the different ways you can create a series. Okay, let's connect my charger. Okay, so see now data frame. Okay, in data frame, how we can create a data frame. So there are multiple ways of creating a data frame. So see, one way I'm explaining you here. Suppose same example, I'm going to gym. Okay, gym example. Now we will go to the study. So I'm studying the different subjects. Okay, so what my goal will be, so I have a data science. Okay, I have data science, then I have another subject like data analytics. I have another subject named as what is business analyst. Okay, I'm creating a data frame in front of you. See now what will be the result. Even I'm not even I'm not sure what will be the result. Okay, so I'm deciding a hours. So hours will be, suppose I'm studying it 2 hours a day, 4 hours in a day, 6 hours in a day. So let me convert this data into a data frame. So I'll be writing pd dot data frame, passing my data, and I will be printing df. I hope you came to know something that I have created a data frame. Data frame is of two dimensional. Okay, I have mentioned I think somewhere data frame, yeah, two dimensional size mutable potentially heterogeneous tabular data. So you can see in front of you, I have created a data. In that I have study, that the subject I'm going to study, and then ask how many hours I will be going to study. So that particular thing, that data passed in the data frame, and you can see I created a data frame from two series. So this is my series number one, and this is my series number two. You can see I got study series one and ask series second. So in this way, dataset in Pandas are created that are multi-dimensional tables. Series is like a column, a data frame is a whole table. A very simple, let me write this line. It's a famous line. I used to speak in all my lectures that series is like a column. Series is like a column, and your data frame is the whole table. A very simple way to remember it. Series is like a column, a data frame is a whole table. Everyone clear up to this point? Yes. Yes. Is it easy or hard? Good.
Good. Okay. So let's move ahead and see more operations of the pandas. What are different ways we can interact with the data? So we have, let me take this example only. I hope all are using this example. Okay. So see, we got this result. Now we have one more thing, that is a locate rows. Locate row or locate rows. See, what is this? So as you can see the result above, which result study and ask. The data frame is like a table with rows and columns. So you can see this data frame is like a table which contains rows and columns. So in pandas, in pandas, we use the LOC. LOC is an attribute. LOC is an attribute to return one or more specified rows. If you want to return a row, you can return specified row. What do you mean by specified row? A very simple thing. So see, specified row means it refers to the row index. For example, if I am printing df.loc and I am passing 0, 0 will be what? 0 will be this, and what it will be providing me, see, it will be providing me study as well as arc. Okay, so see, it will be providing me study as well as arc. So it is providing me the details of, it will be providing me the details of particular row. It will be providing me the details of particular row. So see, if I'm writing here 2, then I will be getting BA and RC. Also, it is mentioning me the data type, that is object, and name, that is 2. Is this point clear to all? Yes or no? And you can pass in this way also. Print df.loc. If you want to check the result for two particular things, is it possible? Yes, but in that case you need to pass two square brackets. So you'll be getting two different rows. So for example, in this way, let me show you. So I'm passing 0, comma 1. See, I got a result. When using square brackets, the result is a panda data frame. Whenever you are using this type of thing, whenever you are using in this fashion, the result is a pandas data frame. Whatever result that is result is we are whatever result we are getting, that is a pandas data frame. Whenever you are dealing with this type of things, is it clear? LOC? Yes or no? Yeah, whether sure. What about others? Good to go. Simple. Good. So see, whatever operations I am means whatever operations we are doing now, same operations will be applied to what your CSV, then Excel. So that's the thing I am taking you through the simple data frame, how we can create a data frame, how we can create a series, and how we can perform operations on it. Okay. Now let's see other example. Let me take one more example for you. So you'll be getting, if those students who don't understand, let me take one more example. So see, I'm taking a data in data. This time I have something like anything I can mention, anything I can mention. Okay, calories. So I'm going to gym. I'm burning my calories. So I'm writing this much. I'm writing any calories in front of you. Okay. So these are my calories, and in how many duration those calories are going to burn. I'm providing the duration as well. Duration spelling is wrong. Duration. Okay. So in around 23, 50, any minutes I'm providing, and let me convert it into a data frame, that is created on data frame, and I will be passing data there. Print df. You can say I got this result, and again I'm explaining with the concept of LOC. So when I'm going to print df.loc, I want to check for a day 2,
I want to check for the day 2. Okay, I have not mentioned, I have not given your index. I want to give an index as well. Yes, you can do index. No worries. Whatever you want, you can do. So suppose I will be mentioning index as a day 1, day 2, day 3. Uh, Day 1, day 2, day 3. Okay. Now see I got the index. And if I'm printing day 3, see the result in front of you. Clear? Is it simple? Clear? So I hope everyone has installed this. Installed? Hey, sorry, installed not downloaded. CSV डाउनलोड किया सबने? इंस्टॉल पांडास करना था, इसे इंस्टॉल इंस्टॉल आ रहा है बार बार. अच्छा हाँ. तो अभी इस CSV को अपने अपने फोल्डर में लो. Let me also take my. I also just downloaded in it. So I'll be copying it and pasting it here. Copy नहीं हुआ. So you can see here I got college.csv. तो ऐसा कुछ आपका CSV दिखता है. तो मैंने जैसे CSV लिया तो मुझे सजेशन मिला कि we have a extension for CSV you can install to see more cleaner CSV in a well formatted. तो कलर रेनबो फॉर्मेट में CSV दिखता है. ओके, बाकी कुछ नहीं. दिस इज अ एक्सटेंशन रेनबो CSV. यू कैन नोट इफ यू वांट. तो डेटा आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखता है हाईलाइटेड. ओके. So what we'll be doing now, we will be see how we can read a CSV. Is it hard? Bhaiya, just scroll for a second Yeah. upside. Just scroll for a second. Where? Scroll down. Yes, Okay. just a second. Okay. Yeah, Vashti, any doubt? Yes, done. Done? Yes. Okay, very good. तो सब साथ में है ना मेरे अभी? तो CSV पे प्रोसीड करूँ मैं? Everyone? Yes. ओके. तो ऐसा बताना मुझे, ठीक है? ऐसा कोई आगे पीछे रह गया ना तो मुझे बताते जाओगे, तो मैं आगे जाते रहूंगा और आपकी गाड़ी पीछे रुक जाएगी. ठीक है, सब साथ में जाएंगे स्टेशन पे. साथ में बैठे थे ना सब. जस्ट स्क्रॉल लो मेरे. अच्छा, मेरे इसमें लेट मैसेज दिख रहा है तो पता नहीं. DF इज इक्वल टू, अभी CSV कैसे रीड करते हो वो बता रहा हूँ. देखो, PD PD वही पांडा डॉट रीड CSV. देखो ऊपर ऑप्शन आया, क्या क्या रीड कर सकते हो. रीड क्लिपबोर्ड, CSV, एक्सेल, फीडर, FWF, क्या क्या HTML, JSON, कितने सारी चीजें रीड कर सकते हो. देख लो, अभी किसने कुछ पूछा क्या क्या रीड कर सकते हैं, तो इतनी सारी चीजें आप रीड कर सकते हो. क्या रीड करना है करो. देखा ऑप्शन. अभी अपन कर रहे हैं रीड CSV. अगर जो फाइल आप प्रोवाइड करो वो रीड करना है तो उसका सिर्फ एक्सटेंशन, मतलब सिर्फ बताना पड़ेगा कि भाई एक्सेल कर रहा हूँ CSV एंड आई विल बी पासिंग हियर. अभी मैं वही फोल्डर में हूँ तो मुझे कुछ इतना हार्ड जाएगा नहीं. देखो मुझे सजेशन में मिल गया कि college.csv आपको रीड करना है. इज इट करेक्ट? यस. देखो, सेल गॉट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली. व्हाट अबाउट यू ऑल? आपका सेल हुआ एग्जीक्यूट? college.csv हुआ रीड? Yes. वेरी गुड. यार होशियार बच्चे हो तो. सेकंड थर्ड ईयर में मुझे भी आया तो कितना अच्छा हुआ था इसे. वेरी गुड. चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल क्वेश्चन. अभी देखते हैं क्वेश्चन. हाँ, एक क्वेश्चन. A data frame is like a table with rows and columns. Is it true or false? True. True. Confirm. Yes. यार होशियार है. करेक्ट. सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि डेटा फ्रेम इज कंटेन्स द रोज एंड कॉलम. तो सी ये क्या होगा, जब अभी तो सबको अभी मैंने बोला हूँ, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है. बट सेम थिंग इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग, 10 दिन के बाद किसने पूछा ना
तो विल बी गेटिंग कंफ्यूज, अरे भाई क्या पूछ लिया, ये तो नहीं पता, मुझे पता रहता है मगर वी जस्ट गॉट कंफ्यूज, इज इट करेक्ट, इज इट रॉन्ग, ऐसे ऐसे मन में सब चालू हो जाता है, ठीक है। So always have a notebook with you and write those points and highlight, keep it on highlighting. Okay. So yeah, let's move further. Okay, तो सी एस में सबकी रीड हो गया, वेरी गुड। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो वेन एवर आई विल बी गोइंग टू प्रिंट डी एफ, तो देखो कितना गंदा दिख रहा है, मतलब पूरा डाटा ही प्रिंट कर दिया उनने और बताया भी है क्या क्या है उसमें। तो अपने को वही सीखना है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन सी एस में परफॉर्म किया जाए। ओके, so we'll be seeing one by one operation. So there is one thing, अभी इसको नोट करना चालू करो, ठीक है। So there is one thing that is df dot to string। अब ये जब to string करने बाद मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो what I will be getting, so whenever we are using to string it will be going to print entire data frame, but कैसा प्रिंट करेगा वो देखो। अभी इसमें और इसमें फर्क क्या है, कैन एनीवन लेट मी नो। अभी देखो नॉर्मल प्रिंट डीएफ क्या है और प्रिंट डीएफ डॉट टू स्ट्रिंग क्या है, कैन एनीवन लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस, बताओ डिफरेंस। या एनीवन? Repeat the question, भैया. आई एम आस्किंग दैट, एंड द क्वेश्चन इज वेन एवर यू आर प्रिंटिंग डीएफ, ये जो डीएफ प्रिंट कर रहे हो और इधर तुम डीएफ डॉट टू स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो, तो दोनों के आउटपुट में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉलेबल हो गया सेकंड इसमें। स्क्रोलेबल हो गया, और कुछ? Tabular output. टैबुलर आउटपुट, और कुछ? सब वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुई है. और कुछ? तो सी, अभी आपने सबने डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स बताया मुझे, ठीक है। सो ऑल आंसर्स आर नियर बाय करेक्ट। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। वेरी जीपीटी। सो प्रिंट, इधर ही लिखूंगा मैं आपके सामने, प्रिंट डीएफ और प्रिंट डीएफ डॉट टू स्ट्रिंग, डीएफ डॉट टू स्ट्रिंग डिफरेंस, ये देखो। अभी इसका डिफरेंस, अभी इधर जो लिख के आया है ना, वही मतलब आपने भी जो बोला वो भी सही है, मगर इधर कुछ तो भी लिख के आया है। फर्स्ट लाइन जो अभी तीन चार जनों ने आंसर दिया, सब आंसर्स बरोबर है। अभी उसका मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ। व्हेन यू यूज प्रिंट डीएफ, पांडास ऑटोमेटिकली डिसाइड हाउ मच ऑफ द डेटा फ्रेम टू शो बेस्ड ऑन इट साइज। मींस जब आप डीएफ प्रिंट करोगे, तो इधर देखो, जब डीएफ प्रिंट करोगे तो पांडास खुद डिसाइड करेगा कि क्या बताना है। अब देखो 0 1 2 3 4 लगेज 1 2 8 9 क्या कुछ भी बता रहा है। ओके, so you can see pandas will be going to decide. For small data frame, it will display all the rows and columns. For larger data frame, pandas may truncate the output and show only the first few and last few rows, जो इधर दिख रहा है, and it is separated about with ellipsis। ये देखो, ये जो ellipsis है ना, इधर दिख रहा होगा आपको, ellipsis दिख रहा है ना, कुछ फेक तो नहीं बोल रहा हूँ ना मैं। ये देखो ellipsis, देखा, ये है आपका डीएफ। और जब आप डीएफ डॉट टू स्ट्रिंग करते हो, तो मैटर कन्वर्ट द एंटायर डेटा फ्रेम इनटू अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन, जिसने अभी किसी ने तो भी बोला था। और इट विल शो ऑल द रोज एंड कॉलम, ये भी किसी ने तो भी बोला था, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द डेटा फ्रेम, मतलब कितनी भी साइज हो, विदाउट एनी ट्रंकेशन, इट विल बी गोइंग टू शो यू होल डेटा सेट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, this is useful when you need to see the entire data frame without omitting the data. Is this point clear to all? Point clear है? Yes or no? यस। Okay. तो सी, अब ये तो हो गया बेसिक चीज। अभी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन है। अभी प्रिंट प्रिंट नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऐसा भी मैंने किया डीएफ डॉट हेड।
So whenever you are doing df dot head, the head मतलब आपको पहले 5 एलिमेंट दिखेंगे, फर्स्ट 5 रोज। अगर आपको फर्स्ट 5 रोज देखना है तो df डॉट हेड करके देखो, आपको फर्स्ट 5 रोज दिखेंगे। किया सबने? दिख रहे हैं फर्स्ट 5 रोज? यस और नो? बोलो अब जल्दी जल्दी, ऑपरेशन सिंपल सिंपल है। ओके, सीएसवी का फुल फॉर्म क्या है, एनीवन? Commands कॉमा सेपरेटेड separated वैल्यूज। values. हाँ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये भी पता रहना चाहिए, ठीक है। व्हाट डू यू मीन सीएसवी का छोटा शॉर्ट फॉर्म, दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। गुड। तो सी नाउ, अभी मुझे लास्ट के 5 एलिमेंट्स देखना है। सो हाउ कैन आई सी दोज एलिमेंट, हाउ कैन आई सी दोज रोज? So you need to just write df dot rows. So you can see last 5 rows. ये देखो आपके सामने ही है 5 rows लास्ट के, देखा? df डॉट हेड, df डॉट टेल। ये क्यों यूज किया जाता है कि आपको देखने की डेटा एक्चुअली की डेटा कैसा दिख रहा है। सो फॉर जस्ट चेकिंग पर्पज यू कैन गो। मगर 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 इधर है df डॉट हेड। इफ यू, अब ये डिफॉल्ट तो 5 बता रहा है, मगर मुझे 10 देखना है, टॉप 10 देखना है। सिंपल थिंग क्या करना है, इसमें क्या पास कर देना, 10। तो आपको पहले 10 डेटा दिख जाएगा, दिख रहा है? करो परफॉर्म साथ में ऑपरेशन, जस्ट सी आर यू एबल टू गेट दोज रिजल्ट, यस और नो, जस्ट टेक इट। Yes. वेरी गुड। अब वही df डॉट टेल भी करके देख लो कि लास्ट 10 देखना है, दिखता है क्या नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इट इज प्रोवाइडिंग 5। अगर मुझे पूरा देखना है तो क्या, दैट्स द थिंग। ओके, सब साथ में है मेरे? हाँ. वेरी गुड। Yes. तो आगे है अभी इन्फो। अभी इन्फो, मुझे इंफॉर्मेशन देखना है, इन्फो अबाउट द डेटा, मीन्स डेटा किसके रिलेटेड है। डेटा किसके रिलेटेड मीन्स कि डेटा में क्या रोज है, क्या कॉलम्स है, डेटा कौन से टाइप का है, मुझे डेटा का इन्फो चाहिए। सो वी हैव इन्फो मेथड, वी हैव इन्फो मेथड। अभी ये देखो, whenever I'm doing that df.info, you can see, so मेरा डेटा है pandas को डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम टाइप का, जिसके अंदर है 1921294 एंट्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1293। ओके, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है 16। उसके अंदर काउंट कितना है, किसका, सब नॉन नल है। डेटा टाइप सबका ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, फ्लोट किसका है, एडमिशन रेट का फ्लोट है, इंटीजर है। उसका मेमोरी यूजेस कितना है, डेटा टाइप्स कौन कौन से है, कितने नंबर्स में है, कितना काउंट है, आपको पूरा इन्फो दिख जाएगा df डॉट इन्फो करने बाद। आर यू एबल टू सी? Yes. या किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक तो नहीं आया है क्या कोई प्रॉब्लम? ये सिंपल है अंदाज। सिर्फ व्हाट यू रिक्वायर्ड इज द प्रैक्टिस। ओके, भैया ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? तो ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? तो whenever string, मतलब जब आप स्ट्रिंग सुनते हो तो what do you think, what thing comes to your mind whenever you are string? सिंपल क्वेश्चन। या वैष्णवी ना? Character. हाँ. हाँ, क्या Characters. कैरेक्टर मीन्स अकॉर्डिंग टू यू स्ट्रिंग कंटेंट्स मीन्स उसके अंदर सिर्फ ये होते हैं कि ए टू जेड टाइप, ऐसा कुछ? नहीं. सब कुछ रहेगा, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स हम्म। कैरेक्टर. तो सी वैष्णवी, जब स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में जब बोला जाता है तो स्पेसिफिकली इट रिप्रेजेंट टेक्सचुअल डाटा। टेक्सचुअल डाटा मीन्स इट कैन मीन्स, अभी इसके अंदर कैसा बताया जाऊँ, आपको एग्जांपल दिया तो भी चलेगा उसके रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, तो चार्जर लगाया, हाँ हाँ। सो सी, whenever you are dealing with the string, और जब इसके अंदर भी एक टाइप होता है कि जब आप pandas के अंदर कर रहे हो तो you will be having the other meaning like object and string, and whenever you are dealing with the plain python so you will be having the other difference. Okay, so see here, let me take you example. So very good question. Object, string. So
in pandas object is what is a you can see generic. When what do you mean by generic? Generic means uh, generic data type used to store a wide range of data types. And what does it include? A very important thing. What things it includes? It includes your string, then your list, then your dictionary, or any custom object you can say. Okay, or any custom object. So whenever you see data type, that is your data type is equal to object for any column, it usually contains a string, but can hold any Python object. Can hold any Python object. Whenever you see data type is equal to object, always remember that column it usually contains a string. मतलब उसमें string होता है, but it can hold any Python object, and it can hold any Python object means other than string, it can hold any other type of object. बट इफ यू आर डीलिंग पर्टिकुलर विद द स्ट्रिंग, मतलब आप डायरेक्टली स्ट्रिंग से डील कर रहे हो, ओनली विद अ स्ट्रिंग. सो इन दिस केस व्हाट हैपन, सो इन द रिसेंट वर्जन ऑफ तुम्हारा पांडास के अंदर क्या होता है, जो तुम्हारा स्ट्रिंग है ना, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है स्पेसिफिकली, स्पेलिंग गलत हो गया तो देख लेना, स्पेसिफिकली ओके रिप्रेजेंट्स स्ट्रक्चरल डेटा, textual data. Okay, so it only represents a textual data and it is dedicated to strings only, which is used for storage and optimized purpose. Means if you know that the data will be only containing the string, then you can mention that it has a particular string type. Otherwise you can go with the object type. For more clearance, let's go with the GPT, and we will ask GPT object and string example in pandas. So see, we'll see more clear example. If you don't go out with the definition, to see the example. Yeah. So what the thing I just explained, it is providing the same thing. I will be explaining you with that code, what the code it is providing. Okay. So see, as mentioned, the object data type is a general purpose type that can hold any kind of Python object. Yeah, the same thing what I explained you just now, including string, list, custom object. Very good. So in string, what happens? It refers specifically to string data. It is distinct from the more generic object. Means string it is a separate and a distinct data. अब इधर देखो एक एग्जांपल दिया है जिसके अंदर उन्होंने कुछ डेटा फ्रेम बनाया है, और इन दैट डेटा फ्रेम यू कैन सी व्हेन दे आर चेकिंग इट्स डी टाइप. जब डेटा फ्रेम का टाइप चेक कर रहे हो तो दे आर गेटिंग एज ए ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट व्हाट इट कंटेन्स ऑब्जेक्ट एज वेल एज इंटीजर विथ न्यूअर वर्जन ऑफ पाइथन. जो न्यूअर वर्जन है जो है 1.0 प्लस का, यू कैन एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कॉलम टू बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग. मतलब आप उसको बता सकते हो कि यू कैन यूज दिस एज टाइप, यू कैन यूज दिस मेथड एज टाइप टू कन्वर्ट पर्टिकुलर डेटा फ्रेम दैट इज DFA. जो DFA है आपका, उसको कन्वर्ट कर सकते हो इन द टाइप ऑफ स्ट्रिंग. मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग. So you can see here you are getting the object. By default, pandas consider it as an object, but using as type, it will be converting it into a string. As you can see, it is converted into the string, and those result explicitly, मतलब अपन ने खुद ने इसको बोला है कि भाई इसको string consider करो. You can see flexibility. Object can store any data type, whereas string is exclusive for text data only. Or you can see a very good example. Again, one more is provided, and it is showing that in this example, trying to convert non-string element to the string data type produces an error. Acha. So a very good example है. So we will be printing it here. Let's see what we will be getting. Okay, I'm executing a new cell. अब जो ये example दिया है ना, it's a very good example. df dot object जिसके अंदर a है और उसके अंदर multiple you can see
इसके अंदर स्ट्रिंग भी है, लिस्ट भी है, इंटीजर भी है, सब कुछ है, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग. यू कैन सी it is converting it to a string, but it will be going to fail. It is mentioned explicitly set column A as string will fail for non-string element. Okay, and it will be going to raise an exception. So it is mentioned here clearly that it is mentioned in this example trying to convert non-string elements to the string data type will raise an error while the object type can hold different kinds of data. Okay, I hope it's a very good difference, and is it clear to all? Yes or no? Yes or no? Yes. What about others? Yes. Yeah. So someone asks you what is object and string. How will be going to differ? Anyone? Anyone in short? Bolo. How will be going to differ? So object can have all the type of data types like Hmm. list, tuple, everything, Hmm. and string contains only the text type of data. Very good. It's a very short difference. You should know about it. Okay. And if you have to convert, if you know that object by default is considered an object, but if you want to convert into the string using h type, you can convert into a string. Okay. Clear? Yeah. This Yes. point I was covering in the further, मतलब बाद में करने वाला था, but ठीक है, अभी कर दिया. Moving further. तो अभी हम देखेंगे क्या देखना था. ओके, to see how we can now perform different simple operations on our data. Where is my data. I think here भी df लिखा है क्या इन्होंने. df लिखा है, ठीक है. We'll be taking this again, we'll be reading. df dot. ओके, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ. अरे क्या हुआ. ओके, same data frame or same file we are reading, and now this time we will be going to check data frame. Okay, this is my data frame. Now I will be performing some simple operations which are present in a pandas, so which will help us to see what are the different operations for cleaning, analyzing, and what all things are there. Okay, so I'm writing something in front of you, that is df dot drop in. After running this, I got some results in front of you. Can anyone just let me know after running df dot drop in what happened? That particular column gets deleted. Which particular column or row? Could you just scroll up? Okay, if you don't know, I Null will be values, explaining. null values rows will be deleted. Null values rows will be deleted. Yeah, that the thing is happening when we are doing df dot drop na. Whenever it's saying drop na, it will be going to delete particular rows. It will be going to delete particular rows which will be having some null values. Is it correct? What I just speak? Yes or no? Yes. Yeah. And suppose, see, I'm going to GPT and I'm writing something. I want to check null values in my dataset. So see, GPT what we provide us is null function. तो देखो क्या होता है जब आप मल्टीपल लाइब्रेरीज पढ़ते हो ना, तो व्हाट हैपन, इज नल ड्रॉप एन ए, फिर उसके बाद फिल एन ए और ऐसे ऐसे एच टाइप. तो देर माइट बी लिटिल बिट कंफ्यूजन, बट एट द एंड यू शुड नो द concept. The concept is that actually what it is doing.
बाकी तो आपको कोड वोड इधर से उधर से मिल जाएगा, मगर जो उसका कॉन्सेप्ट है फंक्शनलिटी पता रहना चाहिए। तो सपोज आई एम डूइंग प्रिंट df डॉट इज नल। जब मैं इज नल करता हूँ तो सी व्हाट द थिंग आई गॉट, फॉल्स 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 फॉल्स। इससे तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे, बट व्हेन आई विल बी डूइंग डॉट सम, तो यू कैन सी मेरे पास एक भी नल वैल्यू नहीं है मेरे इसमें डेटा सेट में। दिख रहा है 0 0 0 0 0 0। सो मैं एजर का उसको ड्रॉप एने भी करूंगा तो कौन सा भी रो डिलीट होने वाला नहीं है। सो दैट्स द रीजन यू कैन से वैसा का वैसा ही डेटा सेट मुझे ड्रॉप एने करने बाद मिला था। So is null is used to check that is your data contains some what you can say null values or not. Is it clear, everyone? Yes. ये सब functions methods please note it, okay? अगर अगर मेरे डेटा में होती कोई null values और मुझे उसको करना था replace, तो I will be writing df dot fill na or with the value whatever value I will be providing, okay? तो इज इट क्लियर? अगर मेरे डेटा में कोई फिल अगर कोई नल वैल्यूज प्रेजेंट होते हैं मेरे डेटा सेट में, ओके, सो इन दैट केस अगर मुझे इसको फिल करना है विद एनी वैल्यू दैट आई नो, सो आई कैन यूज फिल एन ए टू फिल इट। अभी तो कोई है नहीं, अगर होता तो वी कैन गो इन दिस वे। क्लियर? यस एवरीवन? Yes. 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 तो देखो एक और ऑपरेशन में करके बताता हूँ आपको। अभी अपन ने df डॉट इन्फो किया था, है ना, df डॉट इन्फो। सो मुझे ये मिला था, तो मुझे क्या करना है इसके अंदर सपोज ये जो हाईएस्ट डिग्री है ना, तब मैं इसको प्रिंट करूंगा आपके सामने, प्रिंट df और उसके अंदर पास करूंगा हाईएस्ट डिग्री। अच्छा, उसके अंदर सब ग्रेजुएट 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 ये सब लिखा है, उसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, ओके। मुझे उसका डेटा टाइप चेंज करना है, सो आई विल बी पासिंग दैट कॉलम नेम। कॉलम नेम के अंदर वो कॉलम नेम को मैं बोलूंगा कि उसका जो एस टाइप है उसको कर दो, उसको कर दो स्ट्रिंग, ओके। अब जब मैं इसका ये चेक करूंगा, व्हेन आई विल बी गोइंग टू चेक इसका डी टाइप, तो देखो क्या मिलता है। सॉरी, एरर। कैन एनीवन लेट मी नो व्हाट आई हैव डन मिस्टेक? मैंने उसको इसमें डाल दिया था, इट इज एट्रीब्यूट, मगर मैंने उसको मेथड बना दिया था। सो यू कैन से आई गॉट अ स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। एवरीवन जस्ट डू इट। और इसको प्रिंट करना, प्रिंट करोगे तो वैसा थोड़ा स्ट्रिंग में मिलेगा। मैं सिर्फ डीएफ करूंगा तो थोड़ा आगे पाइथन ये सब लिख के आएगा। प्रिंट और नॉर्मल लिखने में फर्क होता है, ओके। क्लियर सबको? क्लियर? या व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, गुड। सो सी देर आर लॉट मेनी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन। मैंने तो उसमें के आधे ही कवर किए अभी तक, और बहुत कुछ है। सो व्हाट आई थिंक, I will be taking more 2-3 operations now, and tomorrow again we'll be going to cover pandas only. जब तक pandas क्लियर होगा नहीं तब तक मैं आगे जाऊंगा नहीं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे आपको जेसॉन भी करके बताना है, उसके साथ एक्सेल भी बताऊंगा थोड़ा थोड़ा, जेसॉन एक्सेल और क्या बताऊँ, जो जो बता सकता हूँ बताऊंगा, फिर आगे जाऊंगा, ठीक है? इज इट फाइन फॉर ऑल? आगे जाके कुछ मजा नहीं है मैथ प्लॉट लेके डायरेक्ट, मजा नहीं आएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, टाइम लगेगा चलेगा। चलो थोड़े और ऑपरेशन बताता हूँ, फिर वी विल वाइंड अप। थोड़ी आज सर्दी भी है इसीलिए।
ओके, तो लेट मी टेक सम सिंपल ऑपरेशन। मेरे पास बुक में लिखा है बहुत सारे ऑपरेशन, मैं सिंपल लूंगा थोड़े, जो आपको लगे समझ में आए। ओके, एक और थिंग है जो आपको बता सकता हूँ मैं। ये देखो, जीपीटी पे कर जाओ, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, मेरे कौन से फोल्डर में है वो, फोल्डर पाइथन लाइब्रेरीज। अब मैंने इसके अंदर उसको CSV दिया, देखो अभी देखो, जस्ट सी द थिंग। आई एम अ बिगिनर, बिगिनर की स्पेलिंग क्या है, कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? NNER। डबल एन है क्या? हाँ। अच्छा ठीक है। आई एम बिगिनर हु इज लर्निंग pandas and I have provided you the CSV. Let me know which operations need to be performed from basic to advanced। ऐसा कुछ तो भी प्रॉम्प्ट दिया है नॉर्मल, ठीक है। अब देखो सब उसने पहले लोड किया CSV, पाथ के बारे में बताया, df डॉट हेड जो अपन ने अभी सीखा, फर्स्ट फाइव रोज में फर्स्ट फाइव रोज, लोड द CSV, बेसिक ऑपरेशन, df डॉट हेड, टेल इन्फो। अच्छा हाँ, डिस्क्राइब। ये देखो, इधर से मुझे आपको हेल्प भी मिलेगा और मैं आपको अच्छे से बता भी सकता हूँ। और जो ये डिस्क्राइब है ना, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डिस्क्राइब के अंदर आपको मिलता है 5 नंबर समरी। क्या मिलता है डिस्क्राइब में आपको? 5 नंबर समरी। अब जो आई सब दिख रहे हैं ना, ये सब रोज के आपको, सब कॉलम्स के मिला है, जिसके अंदर आपका होता है काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, बाद में 25% है, 50% है, 75% है, मैक्स। अगर आपको किसने बोला मुझे 5 नंबर समरी प्रोवाइड करो डेटा का, क्या बोलते हैं इसको? 5 नंबर समरी। ये फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, 5 नंबर समरी। सो यू नीड टू डू df डॉट डिस्क्राइब, df डॉट डिस्क्राइब करना पड़ता है। सो यू गेट अ बेसिक स्टैटिस्टिकल डिटेल्स ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम। जो न्यूमेरिकल कॉलम है उसका ही देता है 5 नंबर समरी। अब इसके केस में देखो, ये केस में देखो, इसके अंदर जो अपन ने ये निकाला था ना अभी, हाईएस्ट डिग्री, तो आपको इधर किधर भी हाईएस्ट डिग्री दिखेगा नहीं, दिख रहा है? हाईएस्ट डिग्री दिख रहा है? नहीं ना? आर यू एबल टू सी? जो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग वो कुछ दिखेगा नहीं, जो न्यूमेरिकल है वही इसका निकाल के देगा, ओनली फॉर द न्यूमेरिकल कॉलम्स। ये भी देखा अपन ने, चेक इज डॉट, मतलब कोई नहीं नल वैल्यूज है क्या। ये जो स्टेप्स होते हैं ये डेटा क्लीनिंग के स्टेप्स होते हैं। ओके, और ये जो सिंपल ऑपरेशन है, ये जो सिंपल ऑपरेशन प्रिंट करूंगा df डॉट कॉलम्स, तो आपके सामने क्या आएगा? एक कॉलम की लिस्ट आएगी जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स प्रेजेंट है। तो आपको दिख रहा है कि ये दिस आर द डिफरेंट कॉलम्स प्रेजेंट इन माय डेटा सेट। अगर मुझे सबके डेटा टाइप्स चेक करने हैं तो आपने देखा है डेटा टाइप्स कैसे चेक करते हैं, df डॉट डी टाइप्स। देखो आपके सामने है जो डेटा टाइप्स। ओके, प्रिंट df डॉट डी टाइप्स। अब ये जो आगे है, ये जो ये तो कॉलम नेम का भी बता दूंगा आपको मैं, सिंपल। और ये जो ILOC आज नहीं बताऊंगा मैं, ILOC और ये बाद में बताऊंगा। सिलेक्ट रोज बाय इंडेक्स, ये भी मतलब जो अपन स्लाइसिंग करते थे ना लिस्ट में, टपल्स में, कैसे करते हैं वो सब। ILOC, LOC तो बताया आपको। कैन एनीवन लेट मी नो व्हाट इज LOC? चलो क्वेश्चन, LOC में क्या किया था अपन ने यूजिंग LOC? व्हाट वी डन विद द हेल्प ऑफ LOC? बताओ। लोकेशन। लोकेशन किसका बताया LOC सीरीज में? या पिक सीरीज में? पर्टिकुलर वैल्यू के, हाँ, पर्टिकुलर इंडेक्स। पर्टिकुलर इंडेक्स। तो देखो, फिर से एक बार बता देता हूँ। LOC अपन ने किया है, LOC, ये LOC स्पेसिफाइड रो। हाँ, स्पेसिफाइड रो, इतना याद रखना है बस, स्पेसिफाइड रो। अब देखो तुम्हारे सामने LOC किया था यहाँ पे,
जब सेकंड उसके अंदर LOC2 पास किया, मतलब जो सेकंड इंडेक्स पास है उसके अंदर जो कॉलम से प्रेजेंट उसका डिटेल्स दिया जा रहा है आपको। तो LOC की सिंपल डेफिनेशन में लिखा था आपके सामने, वो थी, डेफिनेशन किधर गई, LOC, हाँ, लोकेट रो, LOC एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, रेफर टू द रो इंडेक्स, इट स्पेसिफिकली रेफर टू द रो इंडेक्स। अगर आपको डेटा फ्रेम में डील करना है, मगर आपको दो मतलब मल्टीज में जाना है, तो आप दो बार स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके आप उसको प्रिंट कर सकते हो। इन दिस फैशन यू विल बी गेटिंग द टू मेंशन्ड indexed, ओके, रिमेंबर दिस LOC। तो फिर बाद में आपको ILOC भी सिखा हुआ। LOC भी कोई हार्ड चीज नहीं है, सिर्फ उसके अंदर स्लाइसिंग और ये सब चीज होता है। अब ये जो DF कॉलम ने मैंने, इसका मतलब क्या है पता है क्या? अभी देखो, मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है, आई वांट टू सी ओनली वन कॉलम। अच्छा, मुझे एवरेज कॉस्ट का कॉलम देखना है, तो जस्ट अरे 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 सब सिलेक्ट क्यों हो रहा है? एवरेज कॉस्ट, ये देखो मैंने किया प्रिंट, तो मुझे एवरेज कॉस्ट दिख रहा है। अगर मैंने इसके आगे हेड लिख दिया तो मुझे 5 ही दिखेगा। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। देखो, अगर मुझे इसमें ही देखना है, इज नल, इज नल, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, अच्छा सम दे दो भाई इसकी, सम, देखा? ये एक सब इतनी स्पीडिंग कैसे होती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपका हाथ बैठ जाएगा, तो आपको सब समझेगा। देखो अभी इसके अंदर अभी आपको जाकर डबल रोज के साथ डील करना है, तो जब ये मल्टी डायमेंशनल चीज आती है ना, तो उसके अंदर आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो बढ़ जाता है। फिर इसके अंदर आपको कितने कॉलम्स पास करने हैं आपके ऊपर। मैंने देखो एक, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, फिर ये हो गया तीसरा, मेरे सिलेक्ट हो, अब मैं इसको करूँगा प्रिंट। ये देखो आगे जो मेंशन थे वो, और आपको जब एक ही करना है तो आप नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट से कर सकते हो, जब ज्यादा रहेगा तो ऐसे कर सकते हो। और सेम थिंग यू वांट टू परफॉर्म, यू कैन परफॉर्म हेड, बाद में तुम्हारा टेल और एक्सटर्नल फिलेने, जो कुछ करना है वो करो, ठीक है? फ्रीडम, आपके पास जो करना है आपका ही सब कुछ, ठीक है? जीपीटी पे क्यों किया मैंने? क्योंकि आपको मैं बता सकता हूँ कि कैसे कैसे थिंग्स वर्क होते हैं। और जो फिल्टर्ड है, फिल्टर कंडीशन, फिल्टर कंडीशन अपन ने कल नंपाई में भी देखा था, अगर आपको याद होगा तो कैसे वर्क होता है। अभी सपोज लेट मी टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, चलो मैंने लिया मीडियन अर्निंग्स, ठीक है? ये जो मीडियन अर्निंग्स मैंने इधर पास किया, मैं पास किया मीडियन अर्निंग्स, और मुझे देखना है कि मेरी मीडियन अर्निंग ग्रेटर लेस देन है, क्या, और मीडियन अर्निंग ग्रेटर देन है 37200 से। तो अब मैं जब इसको फिल्टर डीएफ को प्रिंट करूंगा तो मुझे वही वैल्यूज मिलेंगे, वही वैल्यूज मिलेंगे जो, मतलब वो, ये मुझे सब कुछ दे दिया उन्होंने, उसने मुझे सब कुछ दे दिया। सब कुछ इन द सेंस कि जो वैल्यूज मीडियन अर्निंग ग्रेटर देन है 37200 से, उसके ये सब है डेटा। मगर मुझे सिर्फ चाहिए कि वैल्यूज मुझे प्रोवाइड करो। सो व्हाट कैन आई डू? आई कैन डू, आई कैन डू सॉरी, you can see the same thing can be given in this fashion as well as, मीन्स वही रिजल्ट अपने को ऐसे भी मिल सकता है। मीन्स वो प्रोवाइड कर रहा है कि भाई 2 नंबर इसमें, 4 नंबर इसमें, 6 नंबर इसमें, 7 नंबर इसमें, जो आपका जो मीडियन अर्निंग है वो ग्रेटर देन है 37200 से। आइदर यू कैन गो इन दिस वे, और आप फिल्टर डीएफ करके भी इसको प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है तो यू कैन गो विद डायरेक्ट एज वेल, ओके? सो देर, ये फिल्टर कंडीशन कब यूज किया जाता है पता है क्या? जब देर इज अ डेटा सेट एंड आपको करना है डील पर्टिकुलर नंबर से ओनली। सपोज मेरे पास एक रेंज है, रेंज ऑफ, यू कैन कंसिडर रेंज ऑफ, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, ओके, सपोज आई हैव द प्रोडक्ट लिस्ट, और मुझे चेक करना है कि मेरे पास कौन सा स्टॉक खत्म हो गया है, मतलब कौन सा स्टॉक लेस देन 10 है। तो इन दैट केस आई कैन परफॉर्म दिस ऑपरेशन एंड आई कैन फिल्टर आउट। अच्छा, तो ये मेरा है प्रोडक्ट जिसका नाम है ये, और उसके अंदर ये चीजें जो है इससे कम है।
So in that condition you can go with the filter. फिल्टर कैसे अप्लाई किया, ऐसे फिल्टर डीएफ नाम दिया है, जो काम कर रहा है वो कंडीशन काम कर रही है. ओके, क्लियर? फिल्टर फिल्टर क्लियर है? यस और नो? Yes. सिंपल है, आपको खुद को 3-4 बार उसको ट्राई करना पड़ेगा तो आपको समझेगा. भाई मैं तो एक बार एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ. और जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग करते हो ना, सो रिमेंबर वन थिंग, जो आपको पॉइंट्स हार्ड लगते हैं उसको स्टार करके रखना, और उसके ऊपर 5-6 ट्रायल एरर करके खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना. ठीक है, ये तो देखा अपन ने, फील ने हैंडलिंग मिसिंग डेटा, ड्रॉप ने भी देखा. ये ग्रुप बाय आज नहीं, ग्रुप बाय कल देखेंगे, क्योंकि ये भी सिंपल थिंग है. इसके अंदर आपसे कुछ समझ में आता है कि हाउ वी कैन यूज एग्रीगेट फंक्शन, मतलब तुम्हारा मीन, सम, ये कैसे निकाला जाता है और ये कैसे डील किया जाता है. दिस विल बी गोइंग टू सी टुमारो. मर्जिंग एंड जॉइनिंग डेटा फ्रेम, ये भी कल देखेंगे. सिंपल सिंपल है, विजुअलाइजेशन अपने को देखना नहीं है अभी. ये सिर्फ नॉर्मल सिंपल सिंपल बच्चे हैं, तो ये कल कवर करके, और तुमको थोड़ा जेसॉन का और एक्सेल का भी थोड़ा बता दूंगा कि कैसे रीड करते हैं फाइल, और सेम ऑपरेशन उधर भी परफॉर्म होते हैं. तो ये जैसे ही कल खत्म होगा, सो वी विल बिगिन विथ मैटप्लॉटलिब. थर्ड मैटप्लॉटलिब है ना, थर्ड लाइब्रेरी? एनीवन? थर्ड कौन सी है इसके बाद? अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी बहुत सिंपल है. उसके अंदर क्या होता है ये तो कल मैंने बताया भी था ना, थोड़ा इंट्रो दिया था मेरे ख्याल से इसका, दिया था कि नहीं? Mode उसमें से यूज करते हैं. हाँ, मोड किया था यूज, सही, मैथ्स ऑपरेशन. तो आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन. समझ में आ रहा है ना पांडास? और कल का नंबर भी Yes. समझा ना? क्या हार्ड लग हाँ. रहा है? नहीं, आप सिखा रहे हो तो इजी है. ना वो तो ठीक है, मगर बाकी का क्या है? सी, इजी सब कुछ है, सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. थोड़ा थोड़ा अभी टाइम दे दो, बाद में मजे करना. ठीक है, और कुछ नहीं. मैंने जैसा बोला था, अभी खुशी ने तो बनाया है एक्सेल, जैसे मुझे टाइम मिला ना तो मैं इसके अंदर रेफरेंस वीडियो ऐड कर दूंगा. कौन सा डायलॉग? वेदन इज डायलॉग. अभी पढ़ो. हाँ, वो तो सब सुनते हैं, वो तो अभी भी सुन रहा हूँ मैं भी. आदत लग गई, और वो बोलने की भी आदत लग गई. ठीक है, चलो थोड़ा एक एग्जांपल बताता हूँ. एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल, रियल टाइम सिचुएशन, क्या बोलना है वो बोलना. सो व्हेन आई वाज, मतलब जब मेरी प्लेसमेंट लग गया था, मतलब पढ़ रहा तो था तभी भी, तो मैंने सोचा अभी जो सीखा है वही इम्प्लीमेंट करूंगा, वापस जाके वही करना है. तो फर्स्ट डे इन द कंपनी, भाई साहब ऐसा टास्क दे दिया जो जिसने कुछ किया ही नहीं था कभी. मतलब ये क्या है? तो बोले अभी सीखो और करो. बोला वाह. तो वापस सीखना पड़ा, फिर करना पड़ा, फिर से सीखना पड़ा, फिर से करना पड़ा. तो इतना याद रखना, जो सीख रहे हो वो तुम्हारा बेस है, जो अभी भी सीख रहे हो वो भी तुम्हारा बेस है. ओके, यू आर मेकिंग योर बेस परफेक्ट. और जो बेस के ऊपर आते जाएगा ना, तो वो आपको, आपका बेस पक्का है तो ऊपर जो जो चीजें बनेगी वो आप संभाल लोगे. अगर बेस ही हिल गया तो ऊपर जो भी पड़ेगा वो सब सर पे आके गिरेगा. सर पे नहीं, नीचे आके गिरेगा. ठीक है, इसलिए मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग बना जाएगा. आपने किसे सीखा भाई? गूगल से, यूट्यूब से ही सीखा, और कहाँ से सीखूंगा? समझा? जब कंपनी में जाओगे ना तब बोले कि करना ही पड़ेगा. क्यों नहीं हो रहा तो उसका रिपोर्ट बताओ, कैसे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, दैट्स द क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू. ओके, ऐसा रहता है. अभी जो पांडास नंपा ये भी सीख रहे हो ना, तो ये तो मैं बता रहा हूँ, मगर मैंने क्या बोला था, इसमें इतने से तो होगा नहीं, साथ में प्रैक्टिस लगेगी. इसलिए मैं यूट्यूब से मैंने वीडियो शॉर्टलिस्ट किए हैं, अच्छे अच्छे 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के, एक एक 2-2 घंटे के किए हैं. तो उसका रेफरेंस दूंगा, उसको अच्छे से गो थ्रू करना. ठीक है, थोड़ा 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 कर करके तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ. और कुछ किसी को डाउट? भैया एक बार वो प्रॉम्प्ट दिखाना जो आपने डाला कौन सा प्रॉम्प्ट? था अभी, जो आपने CSV अच्छा अच्छा फाइल डाल के डाला था. अच्छा, ये रहा प्रॉम्प्ट उसका. डन. गुड.
तो प्लीज जीपीटी का भी जो ये सब इसका है ना यूज करते जाओ, ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ यू कैन यूज इट इफेक्टिवली। ओके, मेरा भी टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी लाइब्रेरीज का सेशन सब सेशन करना है कवर, फिर वी विल बी मूविंग अगेन टू द एआई, जनरेटिव एआई पे फिर से जाएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर अपन इंटीग्रेट करेंगे ये लाइब्रेरीज को, ये जो जो सीख रहे हो ना, फिर और मजा आएगा। एनी डाउट, क्वेश्चन, कुछ भी? 3 मिनट्स, पूछो पूछो पूछो। हाँ वो होगा, उसका कुछ नहीं, वो होगा कवर, जे नया होगा कवर, वो तो मैंने जे नया की सीरीज चले भी होती, मगर बीच में ही दूसरा सब चालू हो गया, दैट्स व्हाई इट स्टॉप। थोड़ा जे नया का अभी साथ में चलने दो, आपको टाइम मिला तो। और हाँ, वो यूज केस का बोला था मैंने, तो यू विल बी गेटिंग अ यूज केस, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा एक एक को, ठीक है। वो आपको खुद खुद रिसर्च करके एक्सप्लोर करके बनाना है, या खुशी? एक्चुअली मेरा पिछली बार जेन एआई हुआ नहीं था, वो हम्म इन्वायरमेंट सेटअप नहीं हुआ था। हम्म और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम आई थी जिस वजह से मुझे पूरा लैपटॉप रीसेट करना पड़ा था। ऐसा कुछ हुआ था क्या? चलेगा ना, देखेंगे क्या इशू है। ओके, नो वरी। तो ओके, विल बी मीटिंग टुमारो सेम टाइम। थोड़ा पांडास बचा है, थोड़ा सा बता दूंगा आपको, अगर कुछ सजेस्ट करूँगा। एनपीटीएल एनपीटीएल मुझे मत पूछो भाई, वो एक दिन का काम है, एक दिन पहले पढ़ना, निकल जाएगा, ठीक है। वो कभी पढ़ा नहीं था हमने एनपीटीएल, इतना होशियार नहीं था मैं। ओके, और कुछ इसका कुछ पूछना है? कल जैसा टाइम मिलेगा शीट अप अपडेट हो जाएगी और वो सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये तो मैंने जो किया वो उसका नोटबुक बनेगा, जो वीडियो रेफरेंस दूंगा उसमें से सब फॉलो करना है। उसके बाद जाके वो अपलोड होगा गिटअप पे अपलोड होने के बाद जाके लिंक्डइन पे पोस्ट होगा। अगर किसने शॉर्टकट मारा तो उसका काम आप पे खत्म, इतना समझ लेना, ठीक है। शॉर्टकट मार के कुछ फायदा होने वाला नहीं, जितना टाइम लोगे टाइम टाइम लो, मगर सब प्रॉपरली कंप्लीट करो, ओके। पांडास के लिए दूसरी शीट बनाऊं कि उसमें कंटिन्यू होगा? नहीं नहीं, पांडास का भी जो चल रहा है, मतलब नंपाई के लिए वही शीट, पांडास के लिए वही शीट, कंटिन्यू विद द सेम शीट, ओके। फॉर ओके। एवरी लाइब्रेरी सेम, मतलब अलग अलग शीट रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सेम टाइम 9 PM ही रखेंगे। 7 करना है क्या आपको? मगर 7 में फिर कोई रहा नहीं रहा, इसलिए घर पे दिवाली भी चल रहा है, काम सब चल रहा होगा, इसीलिए। ओके, कोई नहीं, सही टाइम है। कोई बच्चे सुनते सुनते सो जाते भी होंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नींद नहीं आ रही रहेगी तो नींद भी आ जाती होंगी, अच्छा है ना, और क्या चाहिए। चलो सो जा, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम 9 PM। थोड़ा पांडा सीखेंगे, फिर साई पाई क्या स्काई पाई जो बोलते हो आप वो चालू करेंगे। विल बी मूविंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। या वेदर बाय, वेलकम, गुड नाइट, बाय, खुशी, टाटा। हाँ गेट वेल सुन जल्दी, फिर थोड़ा ऐसा और मजा आएगा जोक वोक मारने में भी। बाय।